अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस डिवाइस का इंट्रोडक्शन देंगे इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A34। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन को ज़रा डिटेल में देखते हैं। Samsung Galaxy A34 X release 2023, the 24th of March, 199 gram, 8.2 mm thickness, Android 13, One UI 5.1, 128 gigabytes, 256 gigabytes storage, micro 6.6, 1080 times 2340 pixels, 48 MP, 2160p, 8 gigabytes RAM, Dimensity 1080, 5000 mAh, LiPo network technology, GSM, HSPA, LTE, 5G, LUNCH. Announced 2023, the 14th of March. Status coming soon. X release 2023, the 24th of March. BODY dimensions 161.3 times 78, 1 times 8, 2 mm, 6.35 times 307 x 032 in. Weight 199 grams, 7.02 ounces. Build glass front, Gorilla Glass 5. Plastic frame, plastic back. SIM single SIM, nano SIM, or hybrid dual SIM, nano SIM, dual standby. IP67 dust, water resistant, up to 1 meter for 30 minutes. Display type Super AMOLED, 120 Hz, size 6.6 inches, 106.9 square centimeter, approximately 84.9% screen to body ratio, resolution 1080 times 2340 pixels, 19.59 ratio, approximately 390 ppi density. Protection Corning Gorilla Glass 5 platform. OS Android 13, One UI 5.1 chipset, MediaTek 6877, Mozambican Metical V, Dimensity 1080, 6 nm, CPU octa-core, 2 times 2.6 GHz Cortex A78 and 6 times 2.0 GHz Cortex A55, GPU Mali G68 MC4 MUMOY card slot, micro Usage shared SIM slot, internal 128 GB, 6 GB RAM, 128 GB, 8 GB RAM, 256 GB, 8 GB RAM. Main camera triple 48 MP, f 1.8, 26 mm wide, 12.0, 0.8 m, PDAF, OIS 8 MP, f 2.2, 123, ultra wide, 14.0, 1.12 m, 5 MP, f 2.4 macro. Features LED flash, panorama, HDR video, 4K 830 fps, 1080p 830, 60 fps, 720p 8480 fps. Selfie camera single 13 MP, f 2.2 wide, 13.1, 1.12 m video, 4K 830 fps, 1080p 830 fps. Sound loudspeaker yes, with stereo speakers, 3.5mm jack, no comms, WLAN, Wi-Fi 800, 2.11a B, G, N, AC, dual band, Wi-Fi direct, Bluetooth 5.3, a 2DP, LE positioning, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NFC yes. Market, region dependent, radio no, USB Type-C 20, OTG features, sensors, fingerprint, under display, optical, accelerometer, gyro, compass, virtual proximity sensing, battery type LiPo 5000 mAh, non-removable charging, 25W wired, MISC colors lime, graphite, violet, silver. Models SMMA 346E, SMMA 346B, SMMA 346B, DS, SMMA 346B, DSN, SMMA 346E, DS, SMMA 346E, DSN, SMMA 346M, SMMA 346M, N, SMMA 346M, DSN, SMMA 3460 SAR EU 0.55W, kg, head, 1.49W, kg, body, price €389, 399 British pound,
30,999 rupees. अब हम इस डिवाइस की पिक्चर्स को देखते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन को, कैसी स्पेसिफिकेशन दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में। काफ़ी अच्छा स्क्रीन साइज़ दिया गया इसमें, 6.6 इंचेस स्क्रीन साइज़ दिया गया। इसके पिक्सल की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे दिए गए इसमें, 1080 मल्टीप्लाई बाई 2340 पिक्सल दिए गए इसमें, काफ़ी अच्छे और बेटर पिक्सल देंगे आपको। इस स्क्रीन की जो पीपीआई डेंसिटी है 390 पीपीआई डेंसिटी देखने को मिलेगी, और इसकी जो रेजोल्यूशन वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो वो भी बहुत अच्छी दी गई इसमें। अब बात करते हैं कैमरे की। कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का दी गई, जो आपको एक अच्छी और क्वालिटी वाली पिक्चर दे सकता है। डे लाइट में आपको अच्छे कलर कम्बिनेशन और डेप्थ में पिक्चर मिलेगी। अगर आप नाइट की बात करें तो इसमें आपको नाइट में कलर कम्बिनेशन देखने को अच्छा नहीं मिलेगा, और आपको इसमें कलर्स भी थोड़े कम मिलेंगे और काफ़ी डार्क पिक्चर मिल सकती है। और बात करते हैं हम इसमें रैम की। रैम 6GB और 8GB इसमें आती है, 2 वेरिएंट में आती है। इसमें जो चिपसेट लगा डायमेंसिटी 1080 जो चिपसेट लगा हो काफ़ी अच्छा लेटेस्ट चिपसेट लगा, काफ़ी अच्छा चिपसेट लगा हुआ इसमें। अगर आप इस चिपसेट की बात करें तो आपकी स्पीड, डिवाइस की स्पीड को काफ़ी अच्छा कर देगा ये। अगर आप 6 और 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज़ करते हो ना, 6GB में आपको काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। अगर आप इससे गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे और गेम की स्पीड भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और वीडियोग्राफी करते हैं तो उसमें भी आपको कलर कम्बिनेशन अच्छा देखने को मिलेगा। 8GB वाला वेरिएंट की बात करें तो उसमें भी आपको इससे ज़्यादा बेटर स्पीड मिलेगी और आपको बहुत अच्छे कलर कम्बिनेशन भी देखने को मिलेंगे और स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो चिपसेट लगा हुआ है ये भी लेटेस्ट चिपसेट लगा हुआ है, आपकी ओवरऑल स्पीड की जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है और बेटर बना देगा। और बात करते हैं अब इसकी बैटरी की, तो बैटरी बैकअप भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बैटरी भी बहुत अच्छी लगी, इसमें 5000 mAh की बैटरी लगाएगी। इसमें देखा जाए तो इसमें आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। गेम खेलते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे का, और अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है। इसमें 2 स्टोरेज होती हैं, 128GB और 256GB स्टोरेज। इसमें माइक्रो SD कार्ड की सहूलत भी मौजूद है। इसमें जो एंड्रॉइड आता है 13 आता है, 1UI 5.1 है। और इसका जो वेट की बात करें तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे। इसमें आपको मेटल टच की फीलिंग आएगी। इसमें 199G वेट है और थिकनेस भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, 8.2 mm थिकनेस है। अगर आपकी साइड्स देखें तो इसकी साइड्स देखें तो काफ़ी मोटी लगती हैं। और अगर ओवरऑल काफ़ी अच्छी डिवाइस है, आपको अच्छी स्पीड मिलेगी इसमें, और काफ़ी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें आपको। अगर प्राइस टैग के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन दी गई है इस प्राइस टैग में आपको। और इसमें जो आपको चार्जिंग केबल मिलती है 2.0 USB टाइप OTG वाली मिलती है, और इसके साथ जो चार्जर आता है वो आपको मिलेगा 25 वाट का, और आपको काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप भी मिलेगा, और आपका फ़ोन भी बहुत काफ़ी जल्द चार्ज हो जाएगा इससे। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हमारे चैनल का नाम है गैजेट टेक रिव्यूज़।